तो ऑनलाइन देखता होगा तो क्या ही होता होगा पता। कभी कभी ऑनलाइन भी चलता है। हाँ। आगे लिखें। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक। When a wind moves, number one लिखना, number one, when the wind move from, when the wind move from a high pressure region towards a low pressure region, from high pressure region towards a low pressure region, the pressure gradient force is applied. The pressure gradient force is next point में, when the winds are moving, when the winds are moving with PGF, that is pressure gradient force, when the winds are moving with PGF, comma, due to the application of, comma, due to the application of the Coriolis force, due to the application of the Coriolis force, the winds start deflecting. The winds start deflecting. Next point में, the pressure gradient force and the Coriolis force, the pressure gradient force and the Coriolis force try to balance out each other. Try to balance out other with consistent deflection, with consistent deflection of the direction of the, with the consistent deflection of the direction of the moving wind. The direction of the moving wind. Next point. As the PGF and CF, that is pressure gradient force and Coriolis, as the PGF and CF balance out each other, balance out each other, the deflection stops. The deflection stops
and the wind moves and the wind moves in the balanced path. The wind moves in the balanced path freely, freely, which which now becomes which now becomes geostrophic, which now becomes geostrophic. Okay, so development of this, we can say geostrophic wind भी हम देखेंगे. अब हमें क्या देखना है? लिखिए. हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट पेज ही चेंज कर दो आप. राइट हियर tri-meridional circulation, tri-meridional circulation, meridional, MERIDIO, tri-meridional. यहाँ एक लाइन लिखो, near equator, near equator, near equator, low pressure is formed. Near equator, low pressure is formed. While at the pole, while at the poles, high pressure is formed. While at the poles, high pressure is formed. Thus we see, thus we see, SEEC, thus we see the winds, the winds rising at equator, the winds rising at equator and deflecting towards poles and deflecting towards poles near troposphere, near tropopause, near tropopause, while the cool winds, while the cool winds subsiding, while the cool winds subsiding near poles, near poles and moving towards equator and moving towards equator near the surface, near the surface, near the surface. Full stop. Forming a single circulation cell, forming a single circulation cell from poles to equator, from poles to equator under the general circulation model, under the general circulation model, MODEL,
अंडर द जनरल सर्कुलेशन नेक्स्ट लाइन में एक स्टार और नोट करो, स्टार नोट NOT नोट स्टार नोट NOTE नोट। नेक्स्ट लाइन में इसमें लिखना है इन रियलिटी, in reality due to the presence of oceans and continent, या तो लैंड भी लिख सकते, due to the presence of ocean and continents or lands and their uneven distribution instead of one single cell, instead of one single cell, instead of one single cell, there are three cells. Instead of single cell, there are three cells representing the circulation of winds, at global scale, SCALE, global scale, called as tri meridional circulation, or tricellular model, or tricellular आप पहले ये वाला टाइप
हो गया। Release or trade wind or trade wind. अपर एयर ईस्टर्लीज और एंटी ट्रेड, ये नीचे भी वेस्टर्ली है और ऊपर भी वेस्टर्ली ही है। नीचे भी वेस्टर्ली, ऊपर भी वेस्टर्ली। पोलर ईस्टर्लीज है, इसका ऊपर वाला बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ आधा ईस्टर्ली और आधा वेस्टर्ली, तो मेरिडियनल एंड जोनल कंपोनेंट। डायग्राम ड्रॉन, लिखो। The trimeridional circulation, the trimeridional circulation is based on three cell model, is based on three cell model, that is number one Hadley cell, number two Ferrel cell, number three polar cell. Number one Hadley cell, number two Ferrel cell, number three polar cell. अब point number one Hadley cell. Point number one Hadley cell. This is a thermally driven cell due to this is a thermally driven cell due to the warm air
due to the warm air formed due to high insolation, formed due to high insolation. Next point. Next point. Due to the due to the warming of surface, due to the warming of surface, the winds starts to move towards the winds rise, लिख देना, the winds rise and starts to move towards the equator, starts to move towards the equator. Okay, full stop. Next point. Here the winds coming from the northern hemisphere and southern hemisphere. The winds coming from the northern hemisphere and the southern hemisphere converges and rises, converges and rises, forming a low pressure system, forming low pressure system. Stop. Point. These winds reaches the tropopause. These winds reaches the tropopause and diverges towards both the hemisphere and diverges towards both the hemisphere. Full stop. Next line. These winds moves towards 30-degree latitude. This wind moves towards 30-degree latitude where they get cooled, where they get cooled, CWLED, cooled, and starts to subside, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में ड्यू टू लॉस ऑफ buoyancy, ब्रैकेट में ड्यू टू लॉस ऑफ buoyancy, BUOYANCY, bracket close, due to loss of buoyancy and near 30 degrees latitude of latitude, they subside towards the surface of earth. They subside towards the surface of earth, resulting in the formation of high pressure system, resulting in the formation of high pressure system. Full stop. Next line. The subsided winds diverges, the subsided wind diverges towards equator and poles,
The subsided wind diverges towards equator and poles, comma, comma, where the equator, where the equator moving winds, where the equator moving winds joins, joins, where the equator moving winds joins again the low pressure zone, again the low pressure zone at 0 degree, the low pressure zone at 0 degrees, completing, completing the circulation in Hadley cell, completing the circulation in the Hadley. Okay, clear? Hadley cell. Number two, Ferrel cell. Number two, Ferrel cell. The Ferrel cell is the Ferrel cell is mechanically driven. The Ferrel cell is mechanically driven, unlike unlike the Hadley cell and polar cell, unlike the Hadley cell and the polar cell, which are thermally driven. Unlike the Ferrel cell, the Hadley cell and polar cell, which are thermally driven. Next point में the subsiding of polar winds, the subsiding of polar winds at 30 degrees of latitude, at 30 degrees of latitude occurs due to the cooling, occurs due to the cooling of wind, occurs due to the cooling of wind. Next line में as this winds reaches the surface, as these winds reaches the surface, they move towards the polar cell, as they move towards 60 degree of latitude. They move towards 60 degrees of latitude. Next point में the similar subsidence, the similar subsidence also occurs at 90 degrees of latitude. The similar subsidence also occurs at 90 degrees of latitude, where the winds also reaches 60 degrees of latitude, where the winds also reaches the 60 degrees of latitude. Full stop. Next point. At 60 degrees of latitude, at 60 degrees of latitude, both the winds coming from both the winds coming from 30 degrees, 90 degrees,
coming from 30 degrees and 90 degrees collide, collide, comma, converges, converges, and mechanically and mechanically forced and mechanically forced to rise up, mechanically forced to rise up, full stop. Next point. These winds, these winds reaching tropopause, these winds reaching tropopause again diverges, again diverges towards poles, towards poles and 30 degrees of latitude, again diverges towards poles and 30 degrees of latitude. Next line, next line. The winds moving from 60-degree to 30-degree latitude, the winds moving towards the winds moving from 60 degrees to 30 degrees of latitude, the winds moving from the 60 degrees to 30 degrees of latitude, they comma they cools up, they cools up, and with and with the anti-trade wind, and with the anti-trade winds coming from equator, and with the anti-trade winds coming from equator subsides, subsides at 30 degrees of latitude, subsides at 30 degrees of latitude. नीचे में एक नोट लिखो, नोट NOTE, फिनोमेना हमने यहाँ पे देखा कि जब विंड्स राइज करती है, when the winds they are rising, when they are rising, जब राइज करती है, एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट में क्या होगा कि विंड्स इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में क्योंकि ये विंड्स कोलाइड कर रही है, तो कोलिजन से क्या होगा, उनका वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। बेसिकली होगी ये चीज कि जो उन दोनों के अंदर में मॉलिक्यूल्स है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकराएंगे, टकराने के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो द मॉलिक्यूल नंबर वन दे विल बी कोलाइडिंग, कोलिजन के बाद में फ्रिक्शन विल बी क्रिएटेड। जैसे ही फ्रिक्शन क्रिएट होता, फ्रिक्शन क्रिएट होते होते दे विल स्टार्ट टू हीट अप, क्योंकि अब ये हीट हो गया है तो दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ लो प्रेशर। देयरफॉर हम लोग देखेंगे कि जो सब पोलर लो प्रेशर है वहां पे देयर इज फॉर्म लो प्रेशर। एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि जब भी विंड राइज करती है, इस पॉइंट में मैं क्या देख रहा हूँ कि हर 1000 मीटर्स में देयर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है। बट दूसरे पॉइंट में व्हाट आई विल से दैट अगर वही विंड्स सबसाइड करेगी, अगर वही विंड सबसाइड करेगी
तो 6.5 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर विल, तो जैसे जैसे विंड सबसाइड करना शुरू होगी तो इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे वो डाइवर्ज करना शुरू करेगी, देयर विल टेम्परेचर इंक्रीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते। ओके, नोट में लिखो, at 60 degrees of latitude, at 60 degrees of latitude, due to the convergence of wind, due to the convergence of wind, the particles of air, the particles of air collide with each other, the particles of air collide with each other, causing friction between them, causing friction between them. Full stop. Next point में, these friction results into the heating of the winds. This friction results into the heating of the winds, which results into the formation of a low pressure system, which results into the formation of a low pressure system. Full stop. Next line में, thus the 60 degree latitude, thus the 60 degree latitude region, region, region is also called as latitude region. 60 degree latitude region is also called as subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt. Full stop. Next line में, while the subsiding winds, at 30 degrees of latitude, the subsiding winds at 30 degrees of latitude results into the formation of high pressure system, also called as subtropical high pressure belt, also called as subtropical high pressure. ओके, लिखने से और क्लियरली समझ में आ रहा है हमें कि क्या फिनोमेना हो रहा है। अब नेक्स्ट लिखेंगे पोलर सेल, थर्ड, नंबर 3, पोलर सेल। Number 3, polar cell. The polar cell are thermally driven cells. The polar cells are thermally driven cells. Full stop. The wind is very cold. The wind is very cold near the poles.
The wind is very cold near the poles. Poles. Poles मतलब कि North Pole and South Pole is very cold near the pole, which results into the subsidence of winds, which results into the subsidence of winds, full stop. These subsiding winds, on reaching the surface of earth, these subsiding winds on reaching the surface of earth diverges towards diverges towards 60 degrees of latitude, diverges towards 60 degrees of latitude, forming a very high pressure system, at 90 degrees, forming a very high pressure system at 90 degrees or pole. Okay. Next point में the cool winds reaching 60 degrees of latitude, these cool winds on reaching the 60 degrees of latitude rises due to the mechanical heating and on reaching the tropopause they diverge towards poles and 30 degrees of latitude. They diverge towards poles and 30 degrees of latitude. 30 degrees of latitude. Full stop. The winds moving from 60 degree to 90 degree, the winds moving from 60 degree to 90 degree again gets pulled up and joins the subsiding winds near 90 degrees completing the circulation called as polar cell. यहाँ पे क्या हुआ कि हमने तीनों चीजें कंप्लीट कर, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे ओके
The trimeridional circulation, the trimeridional circulation or the three cell model, the trimeridional circulation or the three cell model is very important, for maintaining for maintaining the balance for maintaining the balance of for maintaining the heat balance of heat which is which is which is transferred which is heat which is transferred from equatorial region which is transferred from equatorial region towards नहीं and लिखना सर equatorial region and the cold polar and the cold polar उसी का ये एक सर्कुलेशन मॉडल है। क्या है कि हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम बना लो, उसके बाद मुझे लिखाना है हाई प्रेशर सिस्टम और उसका फॉर्मेशन। हमने देख लिया है तीनों मॉडल्स कि इक्वेटर में लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, इक्वेटोरियल लो, 30 डिग्रीज में हाई प्रेशर सिस्टम फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्रीज में सब पोलर लो फॉर्मेशन हो रहा है, एंड जो हमारा लास्ट वाला है क्या कहते हैं पोलर हाई, वहाँ हाई प्रेशर फॉर्म। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि विंड सर्कुलेशन भी हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट प्रेशर जोन्स भी। डायग्राम बना लो। हाँ, ये बना चुके हैं क्या? ये बना चुके हैं, हो गया ना? हाँ, तो रहने दो, फिर आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तब अब ये वाला बनाया हुआ आपने, तो ये बना
का बड़ा डायग्राम बना कि प्रेजेंटेशन सही कर सकते। बोथ द हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर में सेम होता है। हो गया, यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, हेडिंग राइट, pressure distribution of earth, the pressure distribution of earth. नेक्स्ट लाइन में we have seen that there is development of equatorial low, there is development of equatorial low, comma, subtropical high, comma, subpolar low, and polar high, in the
previous the previous topic. आगे लिखना है नंबर 1 हेडली सेल, नंबर 1 हेडली सेल at 90 degrees, sorry, at 0 degrees, at 0 degrees, the equatorial low, the equatorial low present, and at 30 degrees, and at 30 degrees, subtropical high, subtropical high is present. Full stop. Next line में the winds, the winds, the winds will move, the winds will move from high pressure to low pressure. The winds will move from high pressure to low pressure. That is the subtropical high to equatorial low. That is subtropical high to the equatorial low. Okay, next line. During this movement, the winds are deflected, the winds are deflected by the Coriolis force. The winds are deflected by the Coriolis force. Bracket में clockwise northern hemisphere, anti-clockwise southern hemisphere. Clockwise northern hemisphere, anti-clockwise southern hemisphere. Next line. The winds here, the winds here moves clockwise. The wind here moves clockwise and anti-clockwise. The winds here move clockwise and anti-clockwise in the northern and southern hemisphere. क्लॉकवाइज को नॉर्थ और एंटी क्लॉकवाइज को साउथ ऐसे कर, बट moves from east to west, but moves from east to west in both the hemisphere, and moves from east to west in both the hemisphere, becoming easterlies, or trade wind, becoming easterlies or trade wind. Second, Ferrel cell at 60 degrees of latitude, at 60 degrees of latitude, subpolar low, at 60 degrees of latitude, subpolar low is formed
and at 30 degrees of latitude and at 30 degrees of latitude, subtropical high is next point. Here the pressure gradient force here the pressure gradient force is formed the pressure gradient force is formed from subpolar low is formed from subpolar low to to नहीं the pressure gradient is formed from subtropical high formed from subtropical high to the subpolar low. Subtropical high to the subpolar, defining wind movement. Defining wind movement. Next point. Here also, the winds are deflected. Here also, the winds are deflected due to Coriolis force. Due to Coriolis force, moving from west to east. Moving from west to east, becoming westerlies. Moving from west to east, becoming westerlies. Okay, the third point लिखेंगे polar cell. Polar cell this sub polar low, the subpolar low 60 degrees, the subpolar low at 60 degrees and polar high at 90 degrees and polar high at 90 degrees form a pressure gradient full stop. Next point, where the winds move from 90 degree form a pressure gradient. Form the pressure gradient full stop. Where the winds move from polar high to subpolar low and deflected by Coriolis force from east to west making them polar easterlies. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में कॉमन मतलब पूरा इसका है ट्राइमेरिडियनल सर्कुलेशन का एक कंक्लूजन टाइप का, उसको लिखेंगे इन दिस वे
The tri the trimeridional circulation model in this way, the trimeridional circulation model explains number one, the rising and subsiding of winds, the rising and subsiding of winds due to thermal and mechanical factor, the rising and subsiding of winds due to thermal and mechanical factor. Point number two, the development of high pressure and low pressure belts, the development of high pressure and low pressure belts, explaining high pressure and low pressure belts, explaining the pressure gradient, explaining the pressure gradients between the cells, pressure gradients between the cells. Number three, between the cells. Okay. Number three, the deflection of winds, the deflection of winds due to Coriolis force, due to Coriolis force, making them easterlies and westerlies. Coriolis force making them easterlies and westerlies. Okay, next point, number four. The transfer of heat, from equatorial, हाँ सर 2 मिनट, हाँ ठीक है सर. हाँ, the transfer of heat from equatorial region, ब्रैकेट में वार्म, एंड पोलर रीजन, ब्रैकेट में कोल्ड, ब्रैकेट में कोल्ड, तो ब्रैकेट वार्म को पोलर, कोल्ड, maintains the heat balance of earth, maintains the heat balance of earth between the heat surplus, and heat deficit regions of earth, between the heat surplus and deficit regions of earth. तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है ट्राइमेरिडियनल सर्कुलेशन. ये जो हमने जो आखिर के 4-5 पॉइंट लिखे, so this is the basic output which we get from understanding this trimeridional circulation. इससे क्या क्या चीज हम डायरेक्टली समझ के अप्लाई कर सकते. एनी डाउट, किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन? मैकेनिकल फैक्टर, ये सरफेस है मेरा. अभी अगर मैं इसको हीट करूं तो हीट करने से क्या होगा, गर्म हो जाएगा. ये हीट किस तरीके से हो रहा है, सन की लाइट से हो रहा है. तो सन की लाइट से हीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी एयर होगा, तो ये
सन की हीट से जो हीट हो रहा है तो वो एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी क्योंकि यहाँ पे हीटिंग हो रही है। हीटिंग कौन कर रहा है? सन की एनर्जी कर। अब मेरे पास यहाँ पे एक रीजन है दूसरा। यहाँ क्या हो रहा है कि ऊपर से विंड जा रही है, बट विंड जाते जाते क्या हो रही है कि वो ठंडी हो जा रही है। ठंडा कोई कर नहीं रहा है उससे, ना ही 0 डिग्री सेल्सियस, बस ठंडी हो गई। ठंडी होने से उन्होंने अपना बॉयंसी लूज कर दी। बॉयंसी मतलब कि जो उनका जैसे फ्लोट हो रही थी, तो फ्लोटेशन अब खत्म हो गया, तो वो सीधा नीचे मूव होना शुरू हुई टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे जैसे वो सरफेस के अर्थ की तरफ आ रही है, तो मान लो एक विंड यहाँ पहुंची, के पीछे में एक और विंड आ रही है, के पीछे में एक और विंड आ रही है। उस केस में क्या होगा, जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि विंड्स एक्यूमुलेट हो रही है। विंड एक्यूमुलेशन के कारण प्रेशर बढ़ेगा। ओके, प्रेशर बढ़ने के कारण हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वी विल सी दैट कि वहाँ एक सिस्टम क्रिएट होगा, प्रेशर सिस्टम। ठीक, और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने ना कोई हीटिंग की, सन की एनर्जी यहाँ पे अप्लाइड नहीं है, ना ही कोई कूलिंग हुई है, लेकिन बिना हीटिंग और बिना कूलिंग के सिर्फ मैकेनिकल फैक्टर मतलब कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहे उसमें चेंजेस होने के कारण वहाँ का प्रेशर सिस्टम और टेम्परेचर सिस्टम चेंज हुआ। तो दैट इज द मैकेनिकल। फिर मैं पोलर रीजन में जाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। सो कूलिंग होने के कारण वहाँ पे जो विंड्स है वो सबसाइड करेगी और चारों तरफ फैल जाएगी। विंड सबसाइड करेगी और फैलेगी। तो दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम। बट किस कारण से हो रहा है? कूलिंग के कारण से। तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो थर्मली ड्रिवन। तो हम देख रहे हैं कि दो मेरे जो सेल है, इक्वेटोरियल सेल और पोलर रीजन, यहाँ पे थर्मली चीजें हो रही है, जबकि मेरा सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो है। यहाँ पे मैकेनिकल हीटिंग हो रही है और हीट होके वो ऊपर जा रहा है, वाइल यहाँ पे मैकेनिकल कूलिंग हो रही है और कूलिंग होके नीचे। तो देयरफॉर मैकेनिकल फैक्टर एंड थर्मल फैक्टर। यहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ। कल हम लोग मिलते हैं एंड कल हम लोग देखेंगे प्राइमेरिडियनल सर्कुलेशन के बाद में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मुझे आपको समझाना है। प्रेशर सिस्टम भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रेशर में बहुत ज़्यादा वो एंटर नहीं करता है। एक बार मैं आपको प्रेशर जोन दिखा दूंगा कि कैसे कैसे। उसके बाद में कल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कल हमारा पूरा क्लास जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे फिनोमेना है जो आपको नहीं पता है। मुझे बहुत बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन वो करके फिर हम नेक्स्ट जाएंगे टूवर्ड्स ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अंडरस्टैंड। सी यू टुमारो। टेक केयर।